तो इस बिल्ड के लिए जो हमने कंपोनेंट्स यूज़ किया है वो है क्रूशियल का 500 GB NVMe SSD एंड ES पोर्ट का 600 वाट PSU, जेब्रॉनिक्स जेबक्रोनस कैबिनेट और Ryzen 5600G गीगाबाइट का B550M वाईफाई मदरबोर्ड और कॉर्सर का एक 16 GB रैम स्टिक जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के साथ आता है। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं 600 वाट का ES पोर्ट का PSU and it's a pretty decent PSU and it got all the important ports as you can see in the box itself. It comes in this yellow box and it carries a 2 years warranty, and the motherboard which we are using here is the Gigabyte B550M. It's a Wi-Fi motherboard and it is a pretty nice, pretty decent motherboard, and it also had got a RGB control fan and inbuilt with Wi-Fi and Bluetooth, got all the heat sinks, and it also supports PCI Gen 4 and pretty good for the price, and it's very easily available in the online and offline market as well. So yeah, you can definitely go for this motherboard, and the details you can see on the box here itself. The RAM which we have used here is the Corsair DDR4 3200 MHz 16 GB single stick, and it's a very nice stick, and this is the box. The SSD which we have used is the Crucial 500 GB NVMe SSD, and this is also a very nice SSD which we can use. This is how the CPU looks when it is powered on, and on the side it has got a tempered glass as you can see, and the fans look really beautiful, they look really pretty, and the cable management isn't very neat and clean on my CPU, but yeah, that's how it looks for now. And it has got some space for the air ventilation as you can see for the front fans, and additionally I have also added hard disk which was lying around in my home, and yeah, this is how it looks from the side panel. तो यहाँ हमने पूरा हार्डवेयर असेंबल कर लिया है, और आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड में SSD इंस्टॉल कर दिया है, और इसमें ऑलरेडी 2 स्लॉट्स है SSD के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं रैम के लिए भी 4 स्लॉट दिया गया है, और इसमें RGB फ़ैन के लिए भी हेडर दिया गया है जिससे कि आप RGB फैंस कनेक्ट कर सकते हैं मदरबोर्ड से डायरेक्टली, और PCI स्लॉट्स है इसमें, प्लस दिस इज़ हाउ द सेटअप लुक्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द कैबिनेट। की बात करें तो आप देख सकते हैं प्लेंटी ऑफ पोर्ट्स है, एक पुराना वाला पोर्ट है, 2 USB HDMI, 2 USB 3.0 और उसके नीचे 2 एंटीना वाईफाई एंटीना के लिए, और एक लैन पोर्ट भी है, फिर अगेन 4 पोर्ट है USB के लिए, और टोटल इसमें 8 पोर्ट्स है, 8 USB पोर्ट्स। नीचे में हमारा ऑडियो पोर्ट्स है। तो यहाँ पर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, हमने यूज़ किया यहाँ पर Ryzen 550-600G और एक 16 GB की रैम सिंगल स्टिक, प्लस हमने इसमें इंस्टॉल किया Windows 11 Pro। टास्क में इसे देख सकते हैं हमारा ये जो रैम है वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ पर रन कर रहा है।
Whole build costed me around 36,000, or and if we use a cheaper motherboard like 450M, then we can complete this build, I think somewhere around 32 to 33,000 easily. And even in the and you saw the performance in the games, like all the games are having 40 to 45 plus FPS, and if we use the dual channel RAM system, then I think we can easily get 10 FPS more out of this build. And even the video editing, the rendering time is pretty good, and for the price I'm very happy to get this kind of performance. And I haven't added any graphics card yet, but still I'm planning. But for now, even without the graphics card, the performance is like really good, and for the price I'm really happy and kind of surprised to see this kind of performance. So yeah, that was whole video about the budget gaming build, and do let me know your thoughts about it, and I will see you in the next video.